Assalamualaikum, welcome back to the channel from Genting, Malaysia. आज हम आपको गेंटिंग का आउटडोर टूर करवाएंगे. Genting is Malaysia's probably one of the biggest theme parks in Malaysia. और इसकी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है. बड़े सालों से यहाँ पे लोगों को अम्यूज कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है. इसमें इंडोर आउटडोर थीम पार्क्स हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये तकरीबन कुआलालंपुर से 1 आवर अवे फ्रॉम कुआलालंपुर. अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो 1 घंटे की ड्राइव आपको ये थीम पार्क पड़ेगा. फेयर्स इसके काफ़ी रीज़नेबल है. वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी टूर में कि कितना हमने पे किया है और क्या इसमें दूसरी चीज़ें हैं जो आप डिस्कवर कर सकते हैं. मगर अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे मास्क ज़रूर लेके आएँ क्योंकि मास्क अब यहाँ पे गेंटिंग में जो है वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या है मास्क. अगर मास्क नहीं है तो एंट्री में आपको और डिले होगा और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मिलेगा. बहुत अच्छी यहाँ पे केबल कार की है जिसको चेयर लिफ्ट भी कहते हैं. वो भी विच टेक्स यू फ्रॉम डाउन टू गेंटिंग. तो अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं करने में तो वो भी आप कर सकते हैं. हमने केबल कार और चेयर लिफ्ट जो भी आप करना चाहें वो हमने ट्राई किया. और लास्ट वीक कल फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंडोर. आज हम आउटडोर देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लग गया. तो यदि रीफर्बिश्ड हुआ है 2 साल पहले ही तो पूरा नया बना है. हमने फिर से एक्सप्लोर किया है. मगर कल मैं आपको इसका इंडोर पार्क भी दिखाऊंगा तो जिसमें बहुत अमेजिंग लाइट्स और एंटरटेनमेंट यानी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है. यानी मलेशिया का मस्ट विजिट है. गेंटिंग की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर है. ये एक आइलैंड है, एक हिल के ऊपर बना हुआ है. बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई है पूरे हिल के ऊपर. और इसमें कॉन्ट्ररी टू मलेशिया वेदर जो ट्रॉपिकल है और पूरे साल यहाँ गर्मी होती है, गेंटिंग में ठंड होती है. तो गेंटिंग में आज भी बहुत सख्त ठंड थी और अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई जैकेट, कोई हुडी ऐसा कोई शॉल आपको लाजमी लानी पड़ेगी क्योंकि अगर यहाँ बारिश हो जाए बहुत एक्सट्रीम ठंड हो जाती है. तो वो प्लीज़ माइंडफुल रहिए क्योंकि मलेशिया में यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि बीचेस हैं, आइलैंड है, ट्रॉपिकल है, गर्मी होगी. बट गेंटिंग इज़ क्वाइट ऑन द कॉन्ट्ररी. तो इसके लिए प्रिपेयर करें.
Thank you. These standards are. Hi there. Hello, is this a water slide? No, it's just a normal ride, actually family ride. It's supposed to be watery, but right now our geyser is having maintenance. So if you're looking for the boat ride, actually the one is on the Epic. No, this one is a boat ride. See, there's a boat, and the boat goes up and goes down, like a pirate. Fine. This you understand? Yeah, you can wait if you want. Let's go there. Here, this one.
Metro 4D. Let's cross the road. Saya harus Wow, I'm big enough to do. Langsung na po. Daddy, come with me. Daddy, what's that big hat? What is it? Yes. What's it called again? 40. 40. I like the island. This is where you come in. You're going to be my new lifeguard, so I can finally go on vacation. Now please proceed to the lifeguard break room where I will show you everything you need to know. I thank you all for being here for the night guard experience, and I'll see you inside very soon. For your safety, please pull the neck bar down to the locked position. After you are seated properly, never stand up once the car has left the loading area. Always remain seated. And finally, please keep your arms and legs inside the vehicle. Don't touch the exit. It can be very sensitive. Thank you. Your night guard experience will now begin. Welcome to the night guard training experience.
Please pay close attention to the following safety instructions. Do take your 3D night guard goggles. Goggles can and should